Okay, so Bismillahir Rahmanir Rahim. So today we will continue with the 8051. Okay, so in last lecture we discussed about the serial port communication और assembly और C language दोनों में हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. But the important thing is we should understand the hardware and plus the pipeline or the data, the uh, flow of signals that will make sure between the chips जिसकी वजह से serial communication possible है. So we discuss about briefly about the serial communication. Okay, और what we saw कि हमारे पास दो तरह से serial communication possible है. Synchronous communication. Synchronous communication में a block of data can be transferred, for example, a complete file, start, and then start sending. Asynchronous communication is a single one byte at a time. To make this happen, हमारे पास special integrated circuit chips हैं. And basically what these chips are the ones which actually which implement the protocols, serial communication. Okay, so जो protocol है उसकी corresponding हमारे पास एक specialized, you can say that a microcontroller is another microcontroller is there that will take care of it. Okay, it's not that microcontroller, लेकिन this is a kind of a chip जो हमारे पास help करती है, support करती है to realize or implement different protocols. Right. So one chip is called UART, the other is USR, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, and the other one is Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Now coming back to the protocol, ये है कैसा protocol? इस protocol में, for example, if the character-oriented transmission is there, we need to frame it. Framing का मतलब है you add a start bit, you add a stop bit. Okay, so if I have something like 8 or 8 characters, 8 bits, तो उसमें एक बिट आपके पास ऐड हो जाएगी फ्रॉम दी स्टार्ट, और एक बिट आपके पास, एक या दो बिट्स आपके पास ऐड हो जाएंगी. ये एक बिट भी हो सकती है, ये दो बिट्स भी हो सकती हैं. एंड द टोटल विल बिकम लाइक 10 bits or 11 bits. Okay, and the sequence goes like this. For example, ASCII character A, and then we will have 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have 8 bits, और ये 8 बिट्स हमारे पास मौजूद हैं, और इन 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए we first have a start bit, and then D0, ये पूरी डेटा बिट्स आपके पास हैं. These are exactly the same as these. Okay, and then we have the stop bit finally, right? अच्छा, इसके अलावा the system is before and after. So before serial communication, okay, and after a serial communication. It means right now it's like a live signal.
Okay, so there is no signal transfer. The signal is high, which is referred to as mark, and a low, continuous low will represent कि अच्छा आपकी communication complete होती है. Of course, after some time it will become high, continuously high as a mark, जो कि ये show करेगा now the system signal is available for it. Okay, and right, and of course अगर इसको continue करें तो it was a low at some time, और उसके बाद जो है यकीनन कहीं ना कहीं कोई serial transmission हुई होगी. So before and after serial communication there is this one character signal transmission like this. ठीक है, so it starts as asynchronous communication. And then we also discuss about the another thing which is called you should know about the baud rate versus bits per second. To have a very simplified understanding, bits per second is directly telling us the information bits. Okay, but baud rate is a kind of a thing which refers to the hardware signaling. This is a hardware or signaling effect. We can have a possibility कि एक positive edge और या फिर एक negative edge may represent 1 bit, 2 bits, or more bits. Okay, so the baud rate will be different in each case. Sorry, the bits per second will be different. So the baud rate, a single transition may result into multiple number of bits. Understanding? Okay, so we will have some complex or more higher order protocols. We will come to that. But sometimes if baud rate, if a signal, इसको हम यूँ लिखते हैं, if a signal transition represents a single bit of information, this implies that कि आपका जो baud rate है, it is same as the bits per second. Okay. Then we talk about specifically 8051 में serial ports हैं, asynchronous. So the operations that it support are synchronous and asynchronous. इसमें जो controlling register है, it is called SCON. We need some special function registers जो कि इसको so the first one is the controlling register, SCON, or we can and the hardware pins that we need. So we have at least these two pins available. We will see कि ये कहाँ पर कौन सी port के ऊपर available हैं. And of course the serial port needs to calculate कि वो किस तरह से उसकी timing और जो speed है. So the speed is connected with the crystal clock. Here you can see कि जो इसकी जो speed है, the speed of transfer is directly connected with speed is somehow connected with crystal frequency. और हम ये देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट 4 मोड्स अवेलेबल हैं, और इन मोड्स के अंदर जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है वो या तो टाइमर सेट करता है या फिर वो डिपेंड करता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर जो आपके पास कनेक्टेड है. ठीक है, एंड मोड 0 मींस मोड 0 में जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 1/12 अवेलेबल है, और मोड 2 के अंदर जो है वो 1/32 है. So 4 mode of operations are available, right? And there are 3 special function registers here as buffer,
SCON, PCON. S buffer क्या करता है? Anyone remember from the last lecture? This is a sort of a data buffer. क्योंकि जो भी आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है, कैरेक्टर ट्रांसमिट करना है, it should have some memory. So S buffer is giving us some kind of a data place. Normally इसको आप buffer भी कहते हैं, खाली serial buffer है S buffer. S control register and P control register. P control will take care of the we will see the priority, or S buffer register 8-bit का है. Okay, we discussed about it. And our communication में before sending we need to first frame it, और जब आप receive कर लेते हैं तो उसको deframe करना होता है. ठीक है, we discussed this in the last lecture. For the detail you can refer back. And this is how S buffer works, just like another register. So अगर आपको let's say यहाँ पर D भेजना था, तो D का जो S की कोड है, या तो D को आप hash and इस तरह से कर देंगे. Otherwise you can directly send hash 44H, और अगर कैरेक्टर देना है तो इस तरह से आपको एक कोटेशन में देना होगा. Anyways, so first we need to move it into the S buffer, or this is how we can manipulate. अगर A से S buffer में लेके आना है, या S buffer में अगर reading कर रहे हैं, this is when we read. This is when we write, sending a signal. तो उस वक्त ये कमांड होगी जब आप read कर रहे होंगे या receive कर रहे होंगे from serial port. Then we will see the example now. सीरियल कंट्रोल रजिस्टर को भी देखा था हमने. सीरियल कंट्रोल रजिस्टर के अंदर वी हैव 8 बिट्स फॉर द मॉड ऑपरेशन और कम्युनिकेशन विद द प्रोसेसर. enable data reception bit 9-bit, and okay, so we have a flag as well. So this will be set, R1 will be set when a character is received. So this is an interesting thing कि अगर आप receive कर रहे हो, okay, so there is a request कि last जो slide है उसको repeat करना है. मैं एक मिनट, let me complete this point. So whenever the communication will be happening, these are the two places, RI and TI. It's like information कि जब अगर आप कोई character को receive करना है तो there is an acknowledgement of receiving the character के serial buffer के अंदर आ चुका होगा, लेकिन serial buffer में जो data है उसकी indication यहाँ आएगी कि like a flag it will be set. ये 1 हो जाएगा जब आप कोई receiver करेंगे character, और जब आप अपनी ट्रांसमिशन कर रहे होंगे एंड फाइनली द स्टॉप बिट हैज बीन सेंट बाय द चिप, तब ये वाला जो आपके पास ट्रांसमिशन का है ये दिस विल बी 1. आई थिंक दिस स्लाइड यू नीड टू नो, राइट? ये वाली स्लाइड कह रहे हैं आप रिपीट करने को? Okay, this is not a program, it is a okay, let me right. The sample program is to show, let me hash it here. This program, it shows the ways in which S buffer register can be accessed in
assembly language. And honestly speaking, in assembly, reading or writing uh, a buffer of a device is very easy. Any single instruction, single cycle instruction will be enough, right? But any high level language, we will see कि C में या और languages में writing or reading buffer. Now by buffer what I mean is, buffer का मतलब है the memory of inside a device. Now by device what I mean is, it may be a serial port, even it can be let's say a printer, it can be a, let's say a data acquisition device, hardware, ठीक है? And so, but in any high level language, even in C, writing and reading buffer is not that simple. तो यहाँ 3 examples हैं. This is the example number 1, ठीक है, जिसमें हम अभी सिर्फ we are just setting the we are just loading the S buffer with the data, ठीक है, just setting the data for serial transmission. Okay. Example number 2. Okay. This is the same. If this is the direct transfer, अभी हम देखेंगे आज by the end we will start talking about के किस तरह से assembly में आप access करते हैं different registers को, addressing modes, ठीक है? तो this is one type of addressing mode. This is another type of addressing mode. कि किस तरीके से आप, not about registers कि किस तरह से copy कर सकते हैं. This is example number 3. इस example में actually we are copying the contents into the A register, ठीक है? So these are 3 different examples. ये कोई एक single वो नहीं है, okay? A is the accumulator, and we can say that A is for accumulator. It is basically a prime register, main register, or the first register. You can say that this is the first normally a first register that is used in many operations. Okay. And something more about accumulator register मैं यहाँ बता दूँ कि in many situations, so this is like जब भी आप
प्रोसेसर की बात करते हैं, ALUs यूनिट्स की, तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड रजिस्टर्स हैं, and in some operations A is like a resource. A register as a resource is uh, is or has some kind of predefined is let me, yeah, so the A register as a resource has predefined predefined what should I call predefined function or role in many operations. Many in many operations. Okay, we will see in detail आगे examples भी आएंगी, but keep in mind कि if you are doing something, I think we did a few instructions before. Let me quickly go back on the timer that I'm calling right now, or when we were talking about the timers, there was some example here in this slide, or give me 1 minute. नहीं, आगे example इंशाल्लाह आएगी तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा. Okay, so we will see. This is something we will see with examples. Okay, so now I will continue. But before that, let me take a snap. आगे चलते हैं अभी. Okay. We have some examples, yeah, from here. So let's review few things on hardware को skip करते हुए. Let's focus on how the registers are being used. Okay. So when it comes to the CPU or CPU को आप CPU has to work on the data. Okay, CPU has to do something and it has to access the data. Now the data can be coming from devices. It can be coming from memory. And the same goes, ये devices को write भी करेगा और ये memory में place भी करेगा. Now to do these things, the CPU needs someone to help. So this help is provided by the registers, right? Now it is interesting कि उसी memory, now there are few things. तो करते ये हैं कि you sometimes you can say that कि the CPU has, for example, इसके पास address lines होती हैं 16 bits की address lines. So 16 bits अगर address lines हैं तो 2 to the power 16, you can say कि this amount is available for कितना होगा ये 64K, if I'm not wrong, 64K kilobytes are available for ये memory available. Now what happens is, the trick is 64K को different portions में divide कर देते हैं. कुछ डाटा, कुछ मेमोरी आपके पास जो है वो डाटा मेमोरी हो जाती है, कुछ आपके पास प्रोग्राम मेमोरी हो जाती है, कुछ आपके पास जो है
स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हो जाते हैं, SFRs, ठीक है. And some is like bit addressable. Okay, so this 64K is divided into different portions. And इसके अलावा आपके पास कुछ हैं जिनको आप कहते हैं these are the register banks. अभी आके जाके some, but basically the point is that your memory is being divided into different portions, right? So interestingly, कुछ memory को तो ये access करेगा to for the instructions, और कुछ memory को ये access करेगा to access the data. फिर जब इसको ports को access करना है तो ports are being accessed through some special function registers, and they also have some bit addressable memories, okay, and then we have some registers R1, R2, R3 and so on. इन सबको access करने का there are some kind of addressing modes. For example, 1, 2, 3, 4. There are PC 5 addressing modes here 805 है. किसी और के अंदर देखेंगे तो हो सकता है different. But they are commonly available in all microcontrollers. The first one is the immediate address. Second is the register. Third is the direct. Fourth is the register indirect. And fifth is the external direct. But ultimately, they are all talking about accessing the data. Sometimes data आपके पास immediate होता है. For example, immediate addressing mode. Immediate addressing mode में अगर हम देखें तो source operand is a constant. यानी instruction के साथ ही आपके पास जो है वो data available है. So in this case, जो मैंने instruction वाला, for example, this instruction is being saved on somewhere. Move A, hash 25H. इसका मतलब है कि this is the data and it is saved or encapsulated within the instruction. ये टोटल आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो अभी हमने पूरा मेमोरी का एक मैप बनाया था उसमें जो प्रोग्राम मेमोरी है ये वहां पर मौजूद होगी पूरी की पूरी along with this hash 25H A और यहाँ पे लिखा हुआ होगा move. तो what we see here is अगर source operand constant है तो वो आपके पास इंस्ट्रक्शन के साथ ही मौजूद होगा, उसके लिए किसी और डाटा मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है. इमीडिएट डाटा इज प्रीसीडेड बाय अ पाउंड साइन जिसको हम हैश भी कहते हैं. अ पाउंड साइन इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड हैश. So it can load information to any register including the data pointer. This is data pointer, D pointer. DPTR is data pointer. And data pointer can also be accessed by as 2-bit registers, DPH or DPL, 8 bits. ये भी 8 bit का होगा और ये भी 8 bits का होगा. Coming back to the first instruction, इसमें data available है. अच्छा, ये now the point is, what is this register doing here? A register. What is R4 register doing here? We have R4 here. ठीक है, ये भी immediate addressing है, ये भी immediate addressing है, ये भी immediate. We have B. And we also have the data pointers. 16-bit का data pointer है. अच्छा, जब आप 16-bit की बात करेंगे तो the data you can send is larger one. So what is wrong? For example, if I write here move, move A, hash 4521H. So tell me, is this right or wrong? Is this correct? ये जो इंस्ट्रक्शन में लिखी है क्या ये सही लिखी है? जी, आप में से कोई मुझे इसके बारे में बताएं.
I'm directly asking this question. No sir, why? वजह क्या है उसकी? simplified. जी अविनाश ने बताया कि it is not like that. तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि this is an 8-bit register. 8 बिट्स की लोकेशन आपके पास मौजूद है एंड यस एंड दिस इज 16 बिट क्योंकि एक जब आप एच हेक्साडेसिमल बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस वन इज बेसिकली 1000. इट इज टेकिंग 4 बिट्स. इसी तरीके से ये 2 जो है दिस विल बी 0100, 4 bits. Similarly, this 5 will be taking 4 and 4. So the overall we will have 16 bits. जबकि A जो है इसमें 8 bits की गुंजाइश है. ठीक है? So this is assembler should take care of it. Yes, and assembler should जैसे आप कील है या माइक्रो जी सर ये कैसे पता चला ये 8 बिट की है, मतलब इसमें 8 बिट ही हो सकता है? या देखें जब आप अपना किसी हार्डवेयर पे काम करेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज हार्डवेयर एस्पेक्ट. This is a hardware specifications है. फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो उसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस आपको नज़र आएंगी. इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर जो है उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर व्हेन वी बाय इट तो उसका एक द ए इज़ बेसिकली इट्स इंटरनल डिज़ाइन. So A corresponds, A is not a variable like in C or other languages. A is basically, A is a hardware sort of memory location. A is fixed 8 bits. ठीक है? तो ये इसका ताल्लुक आपके उस हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस का से है. अगर आप प्रोसेसर लेंगे 16 बिट्स के तो उसके रजिस्टर जो हैं वो 16 बिट्स के होंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट 8051 जो कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है. 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है? तो इसमें मेनली ज़्यादातर रजिस्टर्स 8 बिट्स के हैं बट सम रजिस्टर्स आर सम आर so I should write it. Most registers are 8 bits, but some special registers are 16 bits. For example, जब आप इसमें जैसे ये डेटा पॉइंटर है तो ये 16 बिट्स का है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दिस रजिस्टर हैज़ टू डील विद मेमोरी. ओके, इट हैज़ टू डील विद मेमोरी. डेटा पॉइंटर है. और इंटरेस्टिंगली जो 8051 है इसकी जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है ये एड्रेस बिट्स हैं वो हैं 16. सो यू कैन से दैट कि इसके पास हैं 16 बिट्स की एड्रेसिंग कैपेसिटी. लेकिन जो इसकी डाटा कैपेसिटी है इट इज़ 8 बिट्स डाटा कैपेसिटी. सर जी जी सर मतलब ए जो है एक रजिस्टर है, ए रजिस्टर है 8 बिट का. 8 बिट का रजिस्टर है. ठीक है? ठीक है सर. और ये भी इसलिए आपके पास इलीगल है बिकॉज 5 will take 4 bits, 3 will take 4 bits, 5 will take 4 bits, this 5 will take 4 bits, this 6 will take 4 bits. तो टोटल ये कितना हुआ? ये तकरीबन आपके पास हो जाएंगे कितने? 1 2 3. अच्छा ये 4. This is 1 2 3 4 5. Okay, so this is 16 bits. Full 16 bits, 65535. So the maximum value is this one. But अगर इसको आप इससे एक्सीड कर देंगे तो अगेन इट विल बिकम इलीगल.
लेट मी डायरेक्टली जंप हेयर, दोबारा से हम रिकॉल करते हैं, ये पूरी मेमोरी है, दिस इज द मेमोरी। जब 8051 को बनाया जाता है या वो इंटरनली 8051, बाय द वे माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर में मेन फर्क यही है, माइक्रो प्रोसेसर डजंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ ऑल मेमोरीज इनसाइड इट, माइक्रो प्रोसेसर में ये सब कुछ नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक ही चिप के अंदर आपके पास इंटरनल रोम भी है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी हैं, बिट एड्रेसेबल रैम भी है, जनरल पर्पस रैम भी है। माइक्रो प्रोसेसर में रैम भी आउटसाइड होती है, और so you can say that you will have microprocessor, then you will plug RAM, then you will plug ROM, and then it has some internal registers, ठीक है, इसमें होते हैं registers होते हैं। So this is your computer, but जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर this whole chip will contain all of it, इसके अपने रजिस्टर्स भी होंगे, इसी में इंटरनली रैम भी है आपके पास, इसी में आपके पास रोम भी है। सो दिस इज अ, और ये इन्हीं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी हैं इसमें आपके पास, और इसी के साथ ही आपके पास जो है ना डायरेक्टली पोर्ट पिन्स भी अवेलेबल है, पोर्ट्स भी हैं, जबकि इसमें माइक्रो, सो यू प्लीज कीप इन माइंड ये माइक्रो प्रोसेसर जी। सर वो जो पोर्ट्स की बात कर रहे हैं सर, वो जो कंप्यूटर के जी जी पीछे जो लगे होते हैं पिन वाले, वो वाली पोर्ट्स। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर वो मतलब वो सीरियल पोर्ट्स होते हैं। वो सीरियल पोर्ट यहाँ पे अलग से एक चिप लगेगी, जो वो चिप अलग से लगेगी, वो माइक्रो प्रोसेसर से बात करेगी, जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही माइक्रो प्रोसेस वो यूआर्ट लगी हुई है, ठीक है, सिंगल चिप। ओके, सो ये सर। अच्छा, क्या टाइम हो रहा है, अभी हम इसको रिकनेक्ट करें या कल कंटिन्यू करें? ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो